हुकूमत पाकिस्तान से कौमी एजाज, हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले जर्मन मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर मिशाइल जॉनसन कई बरसों से मोहनजो दारो पर काम कर रहे हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान महर ने उनके साथ खुसूसी नशस्त का एहतमाम किया है। इस मौके पर जर्मन शहर श्वाइनफर्ट की मेयर भी मौजूद थी। दोनों मौज़िज़ शख्सियात का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी, इस वक्त हम बर्लिन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मिशाइल जॉनसन, जो कि जर्मन पाकिस्तान फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनको हालिया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है और इनके पास ऑलरेडी स्टार इम्तियाज़ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनको मौसूल हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं इनके काम के बारे में, जो कि गुज़िश्ता 50 सालों से मोहनजो दारो के बारे में काम कर रहे हैं। It's a long time ago that I started in Pakistan as a young student. I came to Mohenjo Daro and it was like falling in love with it. My destiny in life, I'm still stuck there. It was a wonderful life. I did my PhD on that. I did the research. I was working 20 years on the international UNESCO campaign Save Mohenjo Daro in those days. And for UNESCO, we developed a huge program to save the site. Still, today it is endangered, and nowadays with the government of Sindh, we are further attempting to do research, to do protection. And the latest news we have from Mohenjo Daro, through drillings all around Mohenjo Daro, more than 56 drillings were done, that Mohenjo Daro is the largest Bronze Age city in the world. And I wished that the people of Pakistan would be a little bit more proud on this unique site in the world. And we, as the German Pakistan Forum in Germany, we of course try to attempt to do the best promotion for your wonderful country. The people of Pakistan have to be proud to be the people of this wonderful country. Thank you. हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोरिया रिपर्ट, जो कि जर्मनी के इलाके श्वाइनफर्ट की मेयर हैं और इसके अलावा ये जर्मन पाकिस्तान फोरम की भी प्रेसिडेंट हैं। और ये कि इनका ज़िंदगी का कुछ अर्सा पाकिस्तान के शहर कराची में भी गुजरा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं DPF, जो हमारा जर्मन पाकिस्तान फोरम है, उसके हवाले से। प्लीज से समथिंग अबाउट दिस फोरम। I have known the German Pakistan Forum since my mother was a member, being at that time a member of the embassy, of the German embassy in Pakistan. And like Professor Jansen, I simply love Pakistan because I have my roots there. I was in boarding school, married there. And what I feel is necessary is that we promote a cultural and academic exchange between our two peoples. I feel we all need to understand we live in one global village, and we need to open a new page to thinking things together. If we're thinking about environmental things, but just as well about academic exchanges. And as a mayor of a smaller town in Germany, Schweinfurt, I would love to have more exchanges, also on the basis of maybe the university in Karachi, especially the Institute of Chemistry, doing something together with our FHBS in Schweinfurt, maybe on the basis of robotics or whatever environmental things Karachi seems to need. For that, I'd like to go on with Pakistan German Pakistan Forum. I wish we had more members.